Okay. Hello everyone. Welcome to Q Physics Academy. In this आज का जो क्लास है, आज का क्लास में हम लोग बेसिकली डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस के बारे में और भी डिटेल्स एनालाइज करने वाले हैं. ओके. In this class we are discuss the different type of direct delta functions. So first of all, इस different type का direct delta functions discuss करने से पहले we will first of all distinguish between two types of direct delta functions representations. Okay. So take a heading, different form of the different form of Dirac delta functions. Different form of Dirac delta functions. Okay. What is the different form of Dirac delta functions? That is very important. So we know this is the form delta of x, right? Delta of x, it's a Dirac delta functions representations. Here Dirac delta functions is represented in with respect to any positions coordinate x, y, z, any kind of positions coordinate. Okay, these Dirac delta functions, this Dirac delta functions is represented as a function of any positions coordinate, right? Any positions coordinate, function of any positions coordinate. And the definitions of this type of Dirac delta functions and definitions of this type of Dirac delta functions is nothing but delta of x is equals to 0 when x not equals to 0, and it is equals to infinity when x equals to 0. This is the definitions of this type of Dirac delta functions. हम लोग पिछले जो क्लास था ना, पिछले क्लास में हम लोग इसके बारे में एनालाइज किया, ठीक है, स्टडी किया इसके बारे में. सो आज दिस इज द वन फर्स्ट काइंड ऑफ Dirac delta functions. नेक्स्ट हम लोग सेकंड काइंड ऑफ Dirac delta functions के रिप्रेजेंटेशन को देखने वाले. What is the second kind of representations? Second kind of representations, delta of x, it is equals to g of x. Okay, so here g of x, is any arbitrary functions, okay, it's any arbitrary functions. Please remember, what is this? G of x, it's equals to sine of x or cos of x or sine of x minus some constant term or cos of x minus some constant term. Different forms. This is the g of x. All are the arbitrary functions. Okay, so Dirac delta functions basically represented here with respect to any functions. So this is the Dirac delta representations of Dirac delta functions. Representations of Dirac delta functions. Okay, representations of Dirac delta functions with respect to any other functions. Any other functions. So this is the representations. This is the representations of this second kind of Dirac delta function. And this second kind of Dirac delta functions, the delta functions is represented
with respect to any other functions. Okay, and g of x is any kind of arbitrary functions. It is it is sine of x or cos of x or sine of x minus any arbitrary constant or cos of x plus minus any arbitrary constant. So this is the form. So what is the definitions of this second kind of Dirac delta function? And now how can we can what is the definitions of this delta function? इसका definitions क्या है? Definitions of delta of g of x. Definitions of delta of g of x, right? What is the definitions of this second kind of Dirac delta functions? So here definitions is a delta of g of x. Delta of g of x, is it equals to, okay, is it equals to basically Dirac delta functions delta x minus x naught, first kind of derivative of the given functions at x equals to x naught. So this is the definitions of this second kind of Dirac delta functions. Okay, so here x naught is nothing but, okay, here x naught is nothing but the central point of delta g of x, and g prime of x, it's equals to first order derivative of delta g of x with respect to x at a x equals to x naught. These 2 points are very important. Okay, this is the definitions of the second kind of Dirac delta functions. And x naught is nothing but, here x naught is nothing but the the central point of the given Dirac delta functions delta g of x, and g prime of x is the derivative, first order derivative of the given functions g of x. Okay, so now how can we so basically it is represented, this definitions is basically give us a conversions. Okay, this definitions is a conversions, it's a conversions, one type of conversions of delta g of x converted to delta of x. Okay, this is the conversion of second kind of Dirac delta function to first kind of Dirac delta functions. So for this conversion delta g of x to delta of x, we are follow 2 steps. Basically we are follow 2 steps. Okay, so how to convert delta g of x to delta of x, that is very important. So please take a heading, how to convert delta g of x to delta x minus x naught. This is our second type of aim, how to convert. So as you know, in the definitions, delta g of x equals to delta x minus x naught g prime of x at x equals to x naught. Okay, this is the definitions. डेफिनेशन से आप इस डेफिनेशन को अच्छे से नोट करिए, ठीक है। हम लोग एक एक पॉइंट अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं इसमें। इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दिस इज द इक्वेशन नंबर 1, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1। सो व्हाट इज द स्टेप, वी हियर फॉलो 2 स्टेप मेथड फॉर दिस कन्वर्सन। जो कन्वर्सन है ना डेल्टा ऑफ जी एफ को हम लोग डेल्टा ऑफ एक्स माइनस एक्स नॉट में बेसिकली कन्वर्ट करने के लिए what kind of step we are basically follow. The first step, so basically the first step 1 is nothing but step 1 in step 1, okay, we are calculate the central point, calculation of
सेंट्रल पॉइंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। हम लोग सेंट्रल पॉइंट को कैलकुलेट करने वाले हैं। कैलकुलेशन ऑफ central point. How can I calculate the central point? For calculation of central point, we are substitute, or we put g of x equals to 0. Okay, to find out the central point x naught, we are use or substitute g of x equals to 0, and we can find out the x naught. Okay, so first step जो direct delta functions given होगा with respect to any arbitrary function, this functions is equals to 0, and simplify these equations and we can find out the central point. This is the first step method. The second step, step 2 is in step 2 we are find out the first order derivative of the given functions. First order derivative of g of x at x equals to x naught. लोग जो x naught फाइंड करेंगे, x naught फाइंड जो x equals to x naught हम लोगों ने फाइंड किया, ठीक है, जो मिला बेसिकली उस पॉइंट को हम लोग जो फंक्शन गिवन था उस फंक्शन को हम लोग फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x और एनी आर्बिट्ररी स्पेस कोऑर्डिनेट, देन सब्स्टिट्यूट द वैल्यू x equals to x naught, and we are find out g prime of x at x equals to x naught. Okay, this value is important, and this value are substitute in equations 1. So here we are find out two values, x equals to x naught का वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे। सेकेंड हम लोग फाइंड करने वाले हैं g prime of x, फर्स्ट काइंड ऑफ डेरिवेटिव एट दैट पॉइंट, and these two values are substitute in the equations once. So step 3, we are substitute x naught and g prime of x at x equals to x naught in equations 1. Okay, and then we get the conversions. So then the process of the conversions delta g of x to delta x basically happen. Okay, so for better understand of the problem of the theory, we will use problems to better understand ये जो थ्योरी हम लोगों ने स्टडी किया और जो कंसेप्ट हम लोगों ने बेसिकली अभी लर्न किया, इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए एक प्रॉब्लम डिस्कस करना बहुत जरूरी है, राइट? सो दिस प्रॉब्लम्स इज आस्क्ड इन द क्वेश्चंस इन जेस्ट एग्जामिनेशंस। जो प्रॉब्लम हम लोग बेसिकली डिस्कस करने वाले हैं, इस प्रॉब्लम जेस्ट एग्जामिनेशन में बेसिकली पूछा था। जेस्ट इज ए वेरी हार्ड एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। इस एग्जाम में बेसिकली इस फॉर्मूला से एक क्वेश्चन आपको पूछा था। इस क्वेश्चन को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल देख लेते हैं और इस कॉन्सेप्ट को और भी हम लोग तगड़ा बना लेते हैं। सो टेक ए क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट वी टेक ए क्वेश्चन नंबर 1. This is asked in GIST examinations. Okay, this is asked in GIST examinations. So question is, evaluate the integral okay, evaluate the integral I equals to 100 root 2 upon pi integrations 0 to pi by 2 x
delta 2 sine of x minus root 2 into dx is equals to dash. So what is the value of this given problems or integral? So this is the questions. To solve this problems, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल चेक जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, डेल्टा 2 sin of x minus root 2, this is in the form of gx, right? This is the form of gx, g of x. So g of x is nothing but equals to 2 sin of x minus root 2. So our main aim is this direct delta function, this delta of gx is converted to delta of x form, delta x minus x naught in these forms. So for these conversions, we follow the method, two-step methods. First of all, we put g of x equals to 0. Second, we find out the first order derivative at that point and substitute all the value, okay, and we find out the conversion process. So first step 1, we put g of x equals to 0. So that's give us 2 sine of x minus root 2 equals to 0. So it is equals to sine of x equals to 1 upon root 2. So x equals to basically आपको जो मिलने वाला है pi upon 4. ओके, x का वैल्यू आपको मिलने वाला है pi upon 4. So this is the value of this point at x equals to x naught. So this is the value is x equals to x naught. So we get the central point. So the central point x naught is equals to basically आपको pi upon 4 मिला, ठीक है. नेक्स्ट सेकेंड स्टेप को हम लोग फॉलो करने वाले हैं. सेकेंड स्टेप, इन द सेकेंड स्टेप, ठीक है, सेकेंड स्टेप में हम लोग इसका जो gx था, जो gx था 2 sin of x minus root 2, फर्स्ट काइंड ऑफ डेरिवेटिव वाले, राइट? फर्स्ट डेरिवेटिव, दैट मींस gx इक्वल्स टू बेसिकली आपको मिलेगा 2 cos of x, और इस g प्राइम x का वैल्यू हम लोग x नॉट इक्वल्स टू 5/4 पॉइंट में हम लोग फाइंड करने वाले हैं. सो g of x इट्स इक्वल्स टू x नॉट, दैट इज इक्वल्स टू बेसिकली pi upon 4, ठीक है. सो इट इज इक्वल्स टू बेसिकली 2 cos pi upon 4. So it is equals to 2 into 1 upon root 2. So that is equals to root 2. So we are find out two important two important concept, that is two important case we are basically find out. First of all is the x naught is equals to pi upon 4, the central point. Second is the first order derivative of g of x equals to at x equals to x naught, it's equals to basically root 2. Now substitute this value, this is equation 2. Okay, using equation 2, this set of equations is called equation 2, and this set of equations are now substituted in equations 1. Using equation 2, in equation 1, in equations 1. So equations 1, so we get delta 2 sin 2, it is equals to basically delta x minus pi by 4 2. So this is the conversions of when
Dirac delta functions. Okay, these are conversions of Dirac delta functions. Now it is in forms. Now this forms. We are use. Now these forms we are use in integral form. In integral. ओके जो इंटीग्रल आपको मिला इंटीग्रल गिवन था इस इंटीग्रल में हम लोग यूज करने वाले हैं सो आई इज नथिंग बट इट्स इक्वल्स टू 100√2 अपॉन पाई इंटीग्रेशंस 0 to पाई अपॉन 2 x इसके फॉर्म में इसमें हम लोग डेल्टा x माइनस पाई बाई 4 अपॉन √2 into delta of x. Now 1 by √2 or √2 is cancel each other. 1 by √2 and √2 is cancel each other. So the overall integral it's equals to 100 upon pi 0 to pi by 2 x delta x minus pi by 4 into dx. Now we use the properties of Dirac delta functions, right? So first of all पहले इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे यूज करने से पहले हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल चेक करने वाले हैं ये जो सेंट्रल पॉइंट है ना सेंट्रल पॉइंट ये जो लिमिट है 0 से लेके पाई बाई 2 इसके बीच बेसिकली प्रेजेंट हो रहा है कि नहीं दैट मींस the integrals are enclosed this central point is not is और इस पॉइंट को फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चेक करने वाले हैं so we are use the graphical concept so we are use the graphical concept what is the graphical concept we are use the graphical concept right graphical concept so graphical concept is here this is the point x equals to x naught and this is the point x equals to pi by 2 let us assume and this point is obviously x equals to pi by 4 so the central point is obviously enclosed by this integral limit right so the Dirac delta functions it's basically enclosed within the limit so we are use the properties of Dirac delta functions properties so Dirac delta functions का अपन लोग property यूज करने वाले हैं यहाँ पे so 100 upon pi that is equals to pi upon 4 ओके x के प्लेस में हम लोग पाई अपॉन 4 पुट करने वाले हैं सो पाई पाई एक दूसरे से कैंसिल आउट किया 4 से हम लोग 100 को कट करने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू 25 सो आंसर इज obviously 25 so the value of the integral it is equals to basically आपको मिला 25 so this is a very good question okay this is the very good question of a given problem okay this is a very good question आप इसको नोट करिए अच्छे से एक प्रॉब्लम हम लोग इस प्रॉब्लम को फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए थोड़ा सा हम लोग रिकॉल कर लेते हैं जो प्रोसेस हम लोग फॉलो किया इसमें हम लोग क्या किए थे देखिए इसमें वी आर बेसिकली यूज फर्स्ट ऑफ ऑल जो एक बेसिकली हियर the Dirac delta functions are given in the form of any arbitrary functions and this Dirac delta functions we are first of all converted into normal ordinary Dirac delta functions forms and for this conversions we are use two-step method in first step we are substitute g of x equals to 0 and we get equations and using these equations we are find out the central point of the given Dirac delta functions delta of g of x okay this is our first step in the second step we are find out the first order derivative of the Dirac delta functions of the given functions g of x and g prime and the first derivative also find out at a particular point and that point is basically central point
After find out the central point and the first of derivative of this function, we are substitute in the equations and find out the and we are complete the conversion process of delta gx to delta of x. So this is our method. Using this method, we are find out any kind of problems, right? Okay, that's fine. नेक्स्ट हम लोग एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम लेने वाले हैं, that is asked in the TIFR examination. Okay, that is also asked in TIFR examination. In TIFR examination, so okay. Next, we are also discuss about another properties of Dirac delta functions. Next properties, very famous properties, very important properties. Very important properties. It is delta of x square minus x square. What is the properties of this kind of Dirac delta functions? So it is equals to basically delta x minus a del minus x plus a. So it is basically represented as a 1 upon 2a into delta x minus a plus delta x plus a. So we get the very easy and very famous properties of Dirac delta functions. So it is equals to delta x square minus a square. It is equals to 1 upon 2a delta x minus a plus delta x plus a. So this is the very good or very important properties to solve problems regarding Dirac delta functions. So please, this is a very important. इस प्रॉपर्टीज को यूज करके बहुत बार क्वेश्चंस पूछा है टीआईएफआर जेस्ट नेट और गेट का एग्जामिनेशन में. सो अंडरस्टैंड द ये जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने स्टडी किया अभी, इस प्रॉपर्टीज को और भी अच्छे से समझने के लिए वी टेक ए प्रॉब्लम्स एंड दैट प्रॉब्लम्स बेसिकली आस्क्ड इन टीआईएफआर एग्जामिनेशन इन 2013, राइट? सो द क्वेश्चंस इज, हम लोग एक टीआईएफआर के क्वेश्चंस ले लेते हैं जो बेसिकली क्वेश्चन में पूछा था. सो क्वेश्चन 2, बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज आस्क्ड इन टीआईएफआर 2013 में बेसिकली पूछा था. बहुत इजी क्वेश्चन है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके बेसिकली क्वेश्चन पूछा है. ठीक है, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस्ड करके बेसिकली क्वेश्चन पूछा है. एंड द क्वेश्चन इज द इंटीग्रल minus infinity plus infinity d of x delta x square minus pi square cos x evaluates to option A -1, option B 0, option C 1 upon pi, option D -1 upon pi. This is the questions. जो क्वेश्चन है ना बेसिकली टीआईएफआर का एक 2013 में बेसिकली इस क्वेश्चन पूछा था. तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के पहले हम लोग जो डिराक डेल्टा फंक्शन यहाँ पे गिवन है, इसका फॉर्म हम लोग चेक करने वाले. हम लोग सिंप्लीफाइड फॉर्म बेसिकली हम लोग करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म फाइंड करने के बाद हम लोग इस इंट्रेंस में इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे और देन फाइंड आउट द प्रॉब्लम्स. ओके, तो इसका सॉल्यूशन हम लोग देखने वाले हैं. सो फर्स्ट ऑल जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस यहाँ पे गिवन है, इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस को हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई करने वाले हैं. फर्स्ट हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे. ठीक है, सिंप्लीफाई करना बहुत ही जरूरी है, नहीं तो हम लोग इसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. डेल्टा एक्स स्क्वायर माइनस पाई स्क्वायर, it is basically nothing but delta of x plus pi into x minus pi. As you know, the simplified algebraic form we're learning
प्लस 9 10 इन जो भी हो सकता है, क्लास में हम लोग इसके बारे में पढ़ाई किए थे। ठीक है, कोई बात नहीं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने वाले हैं। इसको जो पिछले वाला जो प्रॉपर्टीज था, इस प्रॉपर्टीज को हम लोग यूज करेंगे। सो दैट इज इट इज इक्वल्स अपॉन 2 पाई इनटू डेल्टा x माइनस पाई प्लस डेल्टा x प्लस पाई। दिस इज अ सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ दिस गिवन Dirac delta functions. This is a simplified form of this given Dirac delta functions. Okay. Now this simplified forms we are used in the integral. Use it integrals. Use it in integrations. Use it in integrations. हम लोग इसको integrations में यूज करने वाले हैं, right? So integrations I is equals to basically था माइनस इंफिनिटी से लेके प्लस इंफिनिटी डी ऑफ एक्स इट इज इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर ब्रैकेट डेल्टा x माइनस पाई प्लस डेल्टा x प्लस पाई into cos x. Okay, now is separate this integral form. Now separate this integral form in two parts. Okay, now separate this form. Now it separate it. Separate these integrations. I it is equals to 1/2 pi under bracket minus infinity to plus infinity delta x minus pi cos x into dx plus second integrations minus infinity to plus infinity delta x plus pi cos x dx. So basically now we use the properties of Dirac delta functions. So it is equals to basically 1/2 pi and 1/2 pi cos pi plus cos minus pi. Okay, cos minus pi. Okay, so it is nothing but 1/2 pi cos pi का वैल्यू बेसिकली -1 होता है और cos minus pi it's also -1. So overall -2/2 pi. So it is equals to -1/pi. So overall finally we get the answer, and answer is option D. Option D. Okay, finally we get the options. Option is D. So option D is the correct answer. Is the answer. Okay, that's fine. That's fine. Next we take another very important now this is our the Dirac delta functions properties in first kind. Let me first. Next, look. नेक्स्ट एक बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम जो टीआईएफआर क्वेश्चन में पूछा, ठीक है, उस क्वेश्चंस को हम लोग थोड़ा सा सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं।
So this question is basically the homework problems. हम लोग खुद से इसको सॉल्व करिए. Homework, the functions f of x represents the nearest integer. Nearest integer less than x. Less than x. Example, f of 3.14 is nothing but 3. Nearest integer. The derivative of these functions for arbitrary x will be given in terms of the integer. Integers in h f of x equals to a prime of x, it's equals to d f of x upon dx, it is equals to what? So options A is basically 0. Options B is the summation over n delta x minus n. Option C, summation over n mod of x minus n. Option D, summation over n f of x minus n. So find out these problems and solve it and send the solutions of the given homework problems in our telegram group or any kind of जो WhatsApp group है, इस ग्रुप में आप लोग इसको सेंड करिए. नेक्स्ट क्लास में हम लोग इस होमवर्क प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं. ठीक है. नेक्स्ट वी टेक अनदर होमवर्क प्रॉब्लम्स. दिस इज द अनदर होमवर्क प्रॉब्लम्स. होमवर्क 2. आप लोग होमवर्क का हर एक क्वेश्चंस, होमवर्क में जो क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बेसिकली प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, हर एक होमवर्क प्रॉब्लम आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, क्योंकि पिछले क्लास का जो होमवर्क प्रॉब्लम होता है वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग फर्स्ट में डिस्कस कर लेते हैं. तो आप लोग अगर खुद से इस होमवर्क प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर लेते हैं ना, आपका सेल्फ इवोल्यूशन वाला पार्ट बहुत ही तगड़ा होने वाला है. और आप अगर आप कुछ गलती भी कर रहे हैं, उस गलती से आप कुछ सीख भी सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसीलिए मैंने हर एक क्लास में आपको कुछ ना कुछ 2 3 4 हम लोग बेसिकली होमवर्क प्रोवाइड करते हैं जो आपको सेल्फ इवोल्यूशन में बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है. और होमवर्क भी नीड भी है आपका सेल्फ इवोल्यूशन के लिए. आपकी प्रिपरेशन में आपको होमवर्क बहुत जरूरी है. और बाद में इस थ्योरी लेक्चर कंप्लीट होने के बाद आपको असाइनमेंट वगैरह बहुत कुछ मिलने वाला है, जो हर एक असाइनमेंट आपको एप्लीकेशन असाइनमेंट सेक्शन में आप चाहिए. और असाइनमेंट सेक्शन से बेसिकली उसको ऑफलाइन मोड में डाउनलोड कीजिए और आप लोग खुद उसको सॉल्व करिए. ठीक है. उसका वीडियो सॉल्यूशंस भी आपको इसमें मिल जाएगा. आप सॉल्व करने के बाद देन चेक इट. ओके. सो ओके, this is the second homework. Find out the integral value. Evaluate the integral minus infinity to plus infinity, d delta y upon dy sin y dy, it's equals to what? Okay. So it is basically option A,
-1, ऑप्शन बी +1, ऑप्शन सी 0, ऑप्शन डी infinity. Okay, find out this value of these integrations. So this is the second homework. Okay, हम लोग this second homework में आप अच्छे से इसको डील करने की कोशिश करिए। देखिए हम लोग इसके प्रॉपर्टीज के बारे में बहुत ही पहले स्टडी किया है। जो प्रॉपर्टीज यहाँ पे गिवन है ना, डिराक डेल्टा फंक्शंस का डेरिवेटिव फ्रॉम गिवन है। बेसिकली क्या होता है डिराक डेल्टा फंक्शंस का डेरिवेटिव? डी डी एक्स डेल्टा ऑफ एक्स, हम लोग इसको स्टडी किया था। इट इज नथिंग बट डेल्टा ऑफ एक्स अपॉन एक्स। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करिए और इसको सॉल्व कर कोशिश करिए। यूज दिस प्रॉपर्टीज। ओके, use these properties to solve the problem. Okay, fine. To solve these problems, use these properties. Okay. आप देखिए हम लोग जो डिराक डेल्टा फंक्शंस का जो थ्री डायमेंशनल प्रॉपर्टी डिराक डेल्टा फंक्शन है, थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस हम लोग को बेसिकली नेक्स्ट क्लास में थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शन। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस नेक्स्ट क्लास है और जो नेक्स्ट लेक्चर आने वाला है, बेसिकली नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग जो डिस्कस करेंगे दैट इज द 3D डिराक डेल्टा फंक्शंस। ओके, 3D डिराक डेल्टा फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन देखेंगे। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या है, बेसिकली स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या होगा, और सिलिंड्रिकल पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डिराक डेल्टा फंक्शंस का रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, और कैसे हम लोग डिराक डेल्टा फंक्शंस और डाइवर्जेंस ऑफ एनी वेक्टर क्वांटिटी, एक वेक्टर क्वांटिटी का डाइवर्जेंस को हम लोग कैसे डिराक डेल्टा फंक्शन से रिलेट करते हैं, वो भी हम लोग चेक करने वाले हैं। ठीक है, सो एक डाइवर्जेंस से भी हम लोग बेसिकली डिराक डेल्टा फंक्शंस, थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस और डाइवर्जेंस ऑफ क्वांटिटी, व्हाट काइंड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कौन सा वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग बेसिकली डाइवर्स करने के बाद वो डिराक डेल्टा फंक्शंस के फॉर्म लेता है। ठीक है, हम चेक करने वाले हैं। दैट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस थ्री डायमेंशनल डिराक डेल्टा फंक्शंस को सॉल्व करने से पहले हम लोग का जो एम है, इसमें हम लोग बेसिकली क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए इसमें हम लोग थ्री काइंड ऑफ फॉर्म डिस्कस करने वाले हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, फर्स्ट ऑफ ऑल कार्टेशियन, सेकंड स्फेरिकल, हम लोग डेल्टा एक्स कॉमा जेड का फॉर्म देखेंगे, स्फेरिकल में डेल्टा आर थीटा फाई का फॉर्म देखेंगे हम लोग, और सिलिंड्रिकल इसमें भी हम लोग देखने वाले हैं डेल्टा एस फाई जेड, इसका फॉर्म हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, हर एक का फॉर्म देखने वाले। इस फॉर्म को डिस्कस करने से पहले वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल लर्न अबाउट द कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इस कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट को डिस्कस करने से पहले वी आर फर्स्ट डिस्कस a very basic table which basically relate the curvilinear coordinate system. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग एक टेबल के बारे में अच्छे से सीखेंगे। टेबल क्या है, देखिए इस टेबल से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हम लोग इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में
हम लोग इसको फाइंड करने के लिए हम उनको हेल्प करने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उस टेबल के बारे में हम लोग थोड़ा सा, टेबल फॉर जनरल फॉर्मूला, हेडिंग डालिए टेबल फॉर जनरल फॉर्मूला। टेबल फॉर जनरल फॉर्मूला बेसिकली हम लोग एक कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इसको बेसिकली कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे। उसके हेल्प से एक जनरल फॉर्म हम लोग डेवलप करेंगे, ठीक है। उस डेवलपमेंट से हम लोग उसका यूज करके हम लोग बहुत सारा हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का फॉर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे, ठीक है। तो आपके पास एक जनरल फॉर्मूला हम लोग गिवन करने वाले हैं, प्रोवाइड करने वाले हैं, और उस जनरल फॉर्म को किस तरह हम लोग हर एक कोऑर्डिनेट सिस्टम में यूज करेंगे वो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज हम लोग जनरल फॉर्मूला को और जनरल टेबल को हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। टेबल फॉर जनरल फॉर्मूला, यहाँ पे हेडिंग के लिए सिस्टम सिस्टम इस तरह का एक बॉक्स बनाइए, इसमें डालिए यू वी डब्ल्यू, यू वी डब्ल्यू, इसमें डालिए H1 H2 H3, ठीक है। आपके पास कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसमें यू क्या होता है, एक्स होता है, वाई और जेड। इसको हम लोग इस H1 H2 H3 के फॉर्म में बेसिकली कन्वर्ट करेंगे। so this conversion is equals to 1 1 और 1, okay। so in spherical polar coordinate, in spherical polar coordinate इसमें बेसिकली क्या होता है, r होता है, थीटा होता है और फाई होता है। इसको हम लोग H1 H2 H3 कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट के फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे। so that is equals to H1 equals to 1, H2 equals to r, H3 equals to r sin theta. Please remember that is very important table, r sin theta। cylindrical सिलिंड्रिकल में देखिए एस फाई जेट होता है, राइट, एस फाई जेट होता है, राइट। इस एस फाई जेट को हम लोग कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम में कन्वर्ट करने वाले हैं, दैट इज इक्वल्स टू 1 एस और 1। so this table is very important, please remember the table, please remember this table। so इस टेबल का यूज करके नेक्स्ट क्लास में हम लोग जो डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस है, उस डायरेक्ट डेल्टा फंक्शंस का फॉर्म हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, ठीक है। सो आज का क्लास यहाँ तक है। हम लोग हर एक लेक्चर को देखिए, अच्छे से प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, हर एक होमवर्क को आप लोग सॉल्व करिए। लगभग 10 होमवर्क आपके पास मिल गया, ठीक है। हर एक होमवर्क आप लोग सॉल्व करिए, और पिछले क्लास में हम लोग इस 2 होमवर्क प्रॉब्लम को डिस्कस करके लेक्चर को आगे लेके जाएंगे, ठीक है। सो चलिए आज का लेक्चर और आज का क्लास यहाँ तक है। हम लोग आज का क्लास यहाँ के स्टॉप करने वाले हैं, और पिछले क्लास में हम लोग फिर से इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।